Good morning, students. I hope all are fine at your places. Today we are going to read the rest part of the chapter number 8 of class 5 English literature, Grandpa's Tree. So students, we already read in the first part that there was one character whose name is Eric, who is a little boy, but unfortunately he was paralyzed after falling from the oak tree, and this oak tree is planted by his grandpa before 30 years ago. So at last, but when he climbed over the tree and he fell down from the tree and he became the paralyzed. So his mother want to cut this tree because she hated that tree, because this tree made his child paralyzed. So let's see the another part. And automatically, but Eric didn't want to cut this tree, so he started to climbing the tree, and miraculously he climbed over the tree. So let's see the rest part. What will happen? The tree cutter scratched his head and grinned. Ma'am, but he's a pretty good climber. I don't know if I can get him down over there from there. तो उन्होंने बोला, ट्री कटर ने अपना हेड पकड़ा और बोला, मैम ही इज़ अ प्रिटी गुड क्लाइंबर, ये तो बहुत अच्छा क्लाइंबर है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसको नीचे उतारना चाहिए या उतार पाओगे. You must have some equipments or something. Just get him down. He will fall. Eric, what's the matter? Eric, what's the matter with you? You have some equipment. बोला तुम्हें कुछ equipments या कुछ होने चाहिए. Just get him down. इसको कुछ लेके नीचे आओ and just get him down. He will fall. Eric, what's the matter with you? और वो नीचे आया. Nothing, mom, Eric said. In fact, I am feeling so good. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I don't know what you were up to, Eric, but that tree is coming down today. तो मुझे नहीं पता तुम ऊपर कैसे चढ़े हो, लेकिन आज ये पेड़ नीचे आके ही रहेगा. His mother turned to the two men. वो अपने दोनों मैन के पीछे, Go, get your equipments. He will be down by the time you get back. बोला जाओ तुम अपने equipments लेके आओ और ये नीचे आ जाएगा जब आप तब तक तुम वापस आओगे. The two men walked off towards their truck. Eric could see them shaking their heads. He looked down at his mother. He continued to remain planted in one spot, staring up at him. The two men walked off towards their truck. वो अपने ऑफिस में. Eric could see them shaking their heads. He looked down at his mother. उन्होंने मदर पे देखा. Who continued to remain planted in one spot and staring up at him. Mom, I'm not coming down. उन्होंने बोला कि मैं नीचे नहीं आने वाला. You must certainly are. You got yourself up there, so get down now. तो बोला है कि आप खुद ऊपर आओ. Now I want you to listen to me, mom, please. And then Eric added, don't you see that the tree is a gift from grandpa? क्या आपको ये नज़र नहीं आता कि ये गिफ्ट क्या है? ये ट्री किसका गिफ्ट है? हमारे ग्रैंडपा का. It remind me of him every day. ये पेड़ मुझे हर दिन उनकी याद दिलाता है. That's why I love to climb it. इसलिए मुझे इसके ऊपर चढ़ना अच्छा लगता है. I want to still climb it. और मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं इस पर चढ़ूँ. Please mom, don't take that away from me. ये पेड़ मुझसे मत छीनो. His mother shook her head, but Eric, if only he didn't plant it, you wouldn't have fallen. तो बोला अगर ये कभी पेड़ नहीं लगा होता तो तुम कभी इससे गिरते ही नहीं और कभी तुम्हें इस व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं. Mom, Eric said, cutting down the tree is not the right thing to do. तो एरिक ने क्या बोला है कि अगर हम पेड़ को काट दें ये कोई सही चीज़ थोड़ी ना है. इट्स लाइक सेइंग आई कांट डू व्हाट आई यूज टू लव टू डू एंड आई कैन मॉम मोर देन यू थिंक. बोला है कि आप जो चीज़ मैं नहीं कर सकता था बट वो आज मैं कर रहा हूँ, आप सोचो ये चीज़. आई सॉ द टू मैन कमिंग बैक टू द ट्री. वो वापिस आ रहे थे कैरिंग सॉथ. उन्होंने बड़ा सा वो कुल्हाड़ी ले रखी थी. हिज मदर शूक हर हेड देन ही सेड क्वाइटली, आई डोंट नो हाउ यू डिड इट. एरिक, हाउ डिड यू गेट अप देयर? मैं नहीं जानती तुम इतनी ऊपर कैसे चढ़े. He pointed down at the base of the tree. I just lowered the peg. उन्होंने वो अपनी मॉम को बताया कि देखो मैंने नीचे वाला लोअर पैक डाला. That's all. It's safe, honest. My arm is really strong and I think it's a good exercise. देखो मेरी आर्म कितनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं ऊपर चढ़ गया और ये एक अच्छी एक्सरसाइज भी है. I can push the chair better. अब मैं चेयर को बेटर पुश कर सकता हूँ. Mother reached over there and touched the lowest peg on the tree, then nodded and turned to the man. All right, she said, just send us a bill for your time. The tree isn't coming down. तो फिर उसकी मदर ने बोला कि ठीक है, आप मुझसे पैसे उन दोनों
जो मैन आए थे एक पेड़ को काटने के लिए, उनको उन्होंने बोला कि आप अपने पैसे बता दो जो हमने आपका टाइम शेयर किया है कि अब ये पेड़ नहीं कटेगा. शी वेटेड अ फ्यू मोमेंट देन प्लेस्ड हर लेफ्ट फुट ऑन द लोअर पैक. उन्होंने अपना लेफ्ट लेग कहाँ रखा? लोएस्ट पैक में. देन वो हेजिटेट करती हुई, मतलब घबराती हुई, उन्होंने दूसरा राइट वाला नेक्स्ट पैक पे रखा. And then slowly she climbed up, looking at the Eric as she did until she got to the branch. और वो वहाँ पे branch पे पहुँच गई. Then she sat on the branch smiling at him. और वो हंस के देखने लगी. See mom, it's not so scary. ये कोई डरावना नहीं है. Is it? Eric asked truthfully. I am terrified, she did, sad laughing. और वो हंसने लगी. She looked down at the house and yard and grinned. But I should have come up here a while ago. मैं कितने टाइम बाद इसके ऊपर आई हूँ. It was a great view, isn't it? यहाँ से कितना अच्छा लगता है ना देखना. It's a fantastic view, Eric said. एरिक ने बोला ये बहुत अच्छा है. Grandpa would have loved what you did today. Grandpa को ये चीज़ अच्छी लगती है जो हमने आज करी. Mother said. Eric nodded. एरिक ने भी सर हिलाया. Then he reached for his mother's hand and there they sat in a tree together. और उसके बाद दोनों हाथों में हाथ लिए ट्री में बैठने, साथ में बैठने लगे. चैप्टर समझ में आया सबको? So student, you have to read this chapter again and again so that you can understand each and every word of this chapter. Thank you and have a nice day.